Hello everyone, I'm Sanghamitra Bhatt. I am learning Reiki from Prashant sir, and I have till now today we completed Reiki level 2, level 1 and 2, and we'll be proceeding with level 3. Uh, so till now I have whatever I have learned from started practicing under the guidance of Prashant sir, and I felt that initially when I joined, I have a very doubtful feeling towards Reiki, which of course sir is aware of. And but today I'm on that stage wherein I have helped my family members going through the tough part of their life and is able to help them, and which I feel till now is the greatest achievement, despite of not believing in this. And I have seen and believed these things because I have seen my child, Reiki healing power helping my children also, and on myself and on our home. I could see our money growing also with the teaching that sir has given us, applying on it. And and yes, a lot of inner healings also I have done through Reiki, which sir is still guiding me. And what I feel positive about everything now, which a few months ago I was a bit bitter, which has even I think this whole thing has taught me to be a bit more uh, you know to have a bit more patience, to show gratitude, which in response made me happy from inside. हुआ है, हाँ। मैंने वही बोला था जब सर से रेकी के लिए बात हुई थी, तो मैंने मना किया था कि सर मैं रेकी नहीं करूंगी, मेरा ये डाउट है। और आप भी आई थिंक थे जब मैंने बोला हाँ, था ये कि था, सर पता था। क्या रेकी नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा डालेगा, ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक बहुत बार पूछा होगा आप सबको, सर को क्लास में। तो सर ने बोला मतलब एक बिलीव करना पड़ेगा एंड यू हैव टू ट्राई। सो जब किया एंड व्हेन आई स्टार्टेड, मेरे लिए तो जो सबसे जो जो अचीवमेंट बिगेस्ट भी वो बिलीव हो सकता है, जो भी होता है, बट आई गॉट कनेक्टेड। एंड वो जो फीलिंग है ना, वो मैं एक्सप्रेस कर नहीं सकती। सो वो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे ना मजबूर किया कि हाँ सर, सर जो बोल रहे थे सही बोल रहे थे, दम है इसमें। मैंने अपनी बेटी को भी वो मेडिसिन लगा रही थी, फिर भी वो कम नहीं हो रहा था वो रैशेस, मैंने हीलिंग दी 2-3 दिन एंड सडनली थिंग्स उसका एकदम क्लीन अप होने लगा। सो वो जो चेंजेस आने लगे, वो मेरे बिलीफ सिस्टम को एकदम पूरा उलट पलट कर दिया। एंड फिर बिलीव एंड ट्रस्ट तो बिल्कुल। आने ही लगे। सो मैंने पहले भी बोला था कि 9 विजुलेशन में भी सर की वॉइस मुझे गाइड करती थी इफ यू ऑल रिमेम्बर। सो यस, मे बी वो एक होता है ना कि I always believe in this कि a good soul guides another soul towards that path. So I feel that sir has something in him जो कि हम लोगों को भी सर के पास, कि हमारे सर को फॉलो करने के लिए या तो सर की बातों को बिलीव करने के लिए फोर्स करता है। मे बी वो बोलते हैं ना क्या, सेम फेदर ऑफ सेम बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ सेम हाँ। फेदर फ्लाई टुगेदर, समथिंग करके वही। हाँ। So yes, I'm looking forward to like level 3 and see the more major changes that it can bring in my life. Thank you, sir. And thank you.